Hello everyone. You are watching HackerTV, the official podcast channel of ASAC 5.0. And ASAC लौटा है अपने 5th edition के साथ, bringing together innovation, execution, and real-world problem solving on one platform. So dates already announced हो चुके हैं. It's on 7th and 8th March. Just one day more remaining for registrations to be getting closed. So stay tuned for more exciting updates ahead. I'm your host, Jayati Shri. And today we are bringing you insights straight from the people who shape innovation behind the scenes, our incredible mentors. Mentors are not just judges or guides, they're industry builders, problem solvers, and visionaries. And today we are diving into their perspectives, their journey, and advice for the next generation of hackers. Welcoming today's guest is Tauqeer Ahmad. Tauqeer Ahmad is a DevOps engineer at NCR Atleos and a passionate community developer. He serves as a co-organizer of GRS Grafana and Friends Delhi, is a Gold Microsoft Learn Student Ambassador, a technical content writer, and a former developer relations professional at Tezos. With expertise in CI/CD infrastructure, as code, monitoring, and testing, he focuses on building fast, reliable, and secure systems. He actively organizes events, mentors students, and shares knowledge through communities, aiming to empower developers and create meaningful impact. Hi, Tauqeer. Hope you are doing great. Hi, Jyoti. I'm absolutely going good, and thank you so much to you and the team for inviting me this. How are you doing? I am also doing great, and it's a pleasure to have you as here. Thank you. It's too much So, for me. so Tauqeer, tell me about yourself. How had been your journey been so far, and how did you Mm. manage to be in such a good place where you are today? Arre, it's nothing much into that. Thank you so much for inviting me again here. I had been here for the very first time in 2025. It was New Year Day. I remember it was more on the hackathon part. At that Mhm, moment, I was in an organization named Telos. I was from the India region. mhm, Today, I'm working at NCR Atleos, which is the ATM as a service provider. We run almost every ATM across the world. And if you like saying like, yeah, we are the top five fintech of this world. So we rule this up. And if you're saying like whatever position we are holding up, it's just from the efforts, the strategy, the intelligence we look for. This is what we, this is what which makes us to bring at to be at this position, right? And yeah. also apart from this, I've been a Grafana and Friends New Delhi organizer now. Mhm. So if you ever wish to be in Grafana's organization, let me know. Sure, sir. I will let you know. So, sir, uh, and again, it's a pleasure to have you with us today. That's And very fine. Very fine. so, sir, tell me about now. Let's talk about some students. So, like as a student who keeps exploring their domains, उन्होंने ना ऐसे कभी कभी बहुत ज्यादा ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा डोमेन ले किस पे जाके डिस्कवर करे सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट हेल्प यू डिस्कवर द डेवऑप्स एंड कम्युनिटी बिल्डिंग एंड अगर कोई बच्चा डेवऑप्स या कम्युनिटी बिल्डिंग पे जाना चाहता है तो व्हाट वुड बी द राइट पाथ फॉर देम Okay, I'll be taking this conversation in Hindi, English both. दोनों में लेके जाऊंगा, right? So obviously, that's a brilliant question, Jati. It's a brilliant question. What about their path and how do the students select it out? क्योंकि यही एक टाइम होता है like in the college, they select their path and they move ahead and they figure out like what they want to do in their life. So just a disclaimer that it doesn't matter like if whatever you path you select आपको उसी में बहुत कुछ फोड़ के रखना है. पाथ चेंजेस हो जाते हैं. सबका स्टैंडर्ड लाइफ में चेंजेस होते हैं. There's nothing in that. There's no shame in changing your profession. Now getting back to the topic again. If you ever to ask me about like, hey, how did I select it into the developer relations and operations? The answer is the community. Yes, I started with the MLSA, the Microsoft Learn Student Ambassador Program, one of the finest and the biggest community over this planet, technical community offered by the Microsoft Learn team. And we as a student ambassador get onboarded into that. Obviously, we are selected on the basis of our skill set.
nothing too much in skill set, but yeah, the conversation skills and whatever confidence you have. I got to know about the community, what exactly the community is, and among those communities, various communities where I have been volunteering, मैंने वहां से सीखा like what are the trend topics and my peers, my seniors in the community, वो क्या फोड़ रहे हैं अपनी लाइफ में, कैसे चीजें स्क्रैच कर रहे हैं, एंड सबसे फन फैक्ट जो मैं थोड़ा लेट समझा, वट एवर रिसोर्सेज जो कि बहुत अबेंडेंस में मिल रहा है जो हम नहीं देख पा रहे, आई विल बी ऑल्सो टेलिंग कि क्या क्या मिल रहा है, वो यूज नहीं कर रहे थे, और obviously me, that was, I was not using it, और वो यूज कर रहे थे, तो कैसा, how they were getting success in their life, right? The time I started using it, consuming it, like yeah, exponential growth, ये चीजें मिली. And also like adding those figure out that they like I'll be telling what were those tools. It was totally the GitHub student developer packs, the Azure credits, the all the cloud platform tools, free tools actually by the companies. Today we are getting the Google Gemini free for to all the students, like pro version, right? The Copilot versions, everything is for free. Set yourself up to that mark that you are able to use those trending, tricky and crispiest technology right away in this era, जो भी अभी available है, and उसमें बेच करके दिखाओ. That will be your trend and that will be your next job. That's it. And this is up to you, like how you are leveraging those. उसको leverage करना सीखो. It's not like यार मुझे ये मिला और नहीं मिला तो मैं नहीं करूंगा, ये करूंगा, या उसमें फोड़ के दिखाना यार. That is my point. उसको खींचो, जब तक तुम लड़ोगे नहीं तो कैसे मिलेगा. Got it. It's like कुछ पाने, मतलब you have to give your 100% तभी जाके वो effort दिखेगा. Correct. If I got dived into the आपका cloud and DevOps, और मैं बस ये देख के थक जाऊँ कि यार मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, अब चीज़ें नहीं है और मैं पीछे हट जाऊँ, दैट वाज सॉर्ट ऑफ कवर्डनेस एंड लैक ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लैक ऑफ प्लानिंग फ्रॉम माय एंड. ये तो एक लैक ऑफ प्लानिंग हो गई. बट इफ आई गॉट टू फाइट, अगर मुझे फाइट करना और मैंने करा, क्या मेरे को इसमें करना ही, अब तो मैं बहुत आगे आ गया, तो दिस बिकम्स अ गेम चेंजर. आपका एटीट्यूड वहां से चेंज होगा. ऐसा तो Nice said, nice. And I hope this will help. This is gonna help everyone जो podcast देख रहे हैं who wants to pursue. And I think so it's not just about DevOps. कोई भी फील्ड पे आप जाना चाहते हो, अब जब तक उसको खींचोगे नहीं, जब तक आप उससे पूरा दोगे नहीं एफर्ट, इट नॉट गोना हेल्प यू. एंड फिर आपको दिखेगा भी नहीं, फिर आप सोचोगे कि आई एम डूइंग एवरीथिंग बट इट्स नॉट गिविंग. बट द थिंग इज आप पूरा 100% दे ही नहीं रहे हो तब तक. that is totally true. It's so like from a student perspective, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा फील आता है कि डेवऑप्स जो है वो काफी ज्यादा वास्ट है, बहुत ज्यादा ब्रॉड है डेवो. सो इफ समवन हु वांट्स टू स्टार्ट टुडे, हाउ कैन दे स्टार्ट टुडे? Answer is that's a actually that's a tricky question around. DevOps is directly not for those beginner who are totally beginners. इसका मतलब समझना. It's not like कि तुम कॉलेज स्टार्ट कर रहे हो और पहले दिन से तुम DevOps कर रहे हो. No, it cannot be possible at all. Reason being, you cannot understand the total the code base, security part, the deployment part. बहुत बहुत मेजर पिलर्स हैं फॉर DevOps, राइट? वो अगर आप नहीं समझे, obviously first day of the college or first day of your like any of the organization where you learn, नहीं हो सकता. Obviously सालों लगते हैं. और DevOps becomes all around these stuffs only. So if you ever like totally like looking into like मैं पूरा डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ना घुस के, which is an ideal part that DevOps के लिए घुस रहा हूँ, to start with a basic cloud and get GitHub. That become for free. Obviously get GitHub for free. And as I already told you कि आपको cloud resources, any of the cloud resources, which is basically Microsoft Azure, you get it for free under Student Developer Pack by GitHub Education. उसको उठाओ, use करो, that's it. You get here 100 to 200 credits. That's more than enough. Dollars credit, dollars something. Okay. More than enough. Use it, consume it. Microsoft is giving for free. Use it. Then go to another cloud. Then go to another cloud. Every concept is same, na? But the thing is, try leveraging it. Yeah, and the one thing is more like आज के टाइम पे ना आप रिसोर्सेज ढूंढने जाओ तो बहुत रिसोर्सेज है. इट्स लाइक कि abundance ऑफ रिसोर्सेज है, बट स्टूडेंट्स ऐसे बहुत ओवरवेल्म्ड भी हो जाते हैं इस चीज को लेके, कौन सा रिसोर्सेज यूज करूं, क्या नहीं करूं. That was me. That is me too. So I want to ask this also to you कि
अगर कोई ऐसा इंसान है कि जैसे मेरे जैसा इंसान जो ओवरवेल्म्ड हो जाता है कि अच्छा ये इतना सारा चीज है, अब मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, या फिर कुछ करने जाओ लगता है कि ये कर रही हूँ लेकिन यही छूट रहा है, तो हाउ कैन समवन कैन ओवरकम दैट चीज को ओवरकम करता बहुत सारे I'll take this थिंग्स। question. I'll take this question personally here, Jati. Like what happens is ना, मैं वो था कि यार रिसोर्सेज मिले सेव कर लो, हे दिस रिसोर्स, दिस वंडरफुल रिसोर्स, लेट्स गेट इट सेव, और कभी नहीं पढ़ा उसको, हाँ एग्जैक्टली, सब कभी नहीं सेव पढ़ा। होके रखा जाता है बस। ठीक है, सेव्ड है वो, सेव्ड की कलेक्शन के लिए बेस्ट है वो, पढ़ने के लिए कभी बेस्ट नहीं हो। So in today's era from 2023, but my pattern has been changed. Like what I used to do now, जब मेरे पास चैट जीपीटी आ गया, world got changed from that day. ठीक है, I mark up the resources, from chat GPT या AI इंटेलिजेंस। यार ये मुझे बता दो कि इसके यूसेस क्या है, इसका सिस्टम डिजाइन क्या है, एंड व्हाट कुड बी द पॉसिबल मेजर्स टू बिल्ड दिस सिस्टम। दैट्स माय प्रोजेक्ट, उसको बनाओ। ओके। वी हैव अ गिटहब कोपायलट, इतने सारे मॉडल्स हैं उसमें, उसमें यूज केस सेट, यू हैव अर एग्जीक्यूशन प्लान, एजेंट मोड, एवरीथिंग इज रेडी, उसको डालो, वो तुम्हें समझाएगा भी, गेट इट अ प्रॉम्प्ट लाइक हे टीच मी एज वेल, गाइड मी एज वेल, आई एम अ वेरी बिगिनर, वो समझाता भी जाएगा, कराता भी जाएगा, कोड भी रेडी करता जाएगा। बस कोड देख के छोड़ना मत, उसको याद करना, उसको समझना कि क्यों हुआ, उसका एग्जीक्यूशन प्लान समझना, देन एक नया सिस्टम अपने आप से बनाना। हीरो इज द गेम चेंजर, दैट्स अ पर्सनल ट्रेनर फॉर यू। तो मैं इसको बहुत यूज करता हूँ पर्सनली। ओके ओके थैंक यू। जो भी ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं वो कितना इस चीज का लेंगे, बट आई नो दिस इज गोना नाउ हेल्प द पर्सन जो ये I usually get a responsibility है तो build a Dockerized system, Dockerized container. We have our code repository, उसका नाम मैं usually इस podcast पे ले सकता because so yeah ये सब kind of like you have your personal time that too then great। अरे वो तो चाहिए। so that like you have built and supported tech communities too, you have built a lot. So for students, how powerful can communities be? So like जो students हैं उनके careers बनाने, how can community play an important role? और आप में से बहुत सारे बनाए तो आपके लाइफ में भी how communities have been, like आप बता भी रहे थे there was a community that Microsoft community that build your thing too. So, yeah, tell about that thing. I get it answered. Like me, for it was Microsoft Learn Student Ambassador program, Yeah. which changed my whole perspective. I was that person who couldn't even get off the mic और कुछ बोल पाए, right? मैं वो बंदा था जो माइक ओपन करके कुछ बोल नहीं रहा था, तो कैमरा तो छोड़ ही दो, ठीक है। एंड टू इवन इन द इंग्लिश एज वेल, व्हेन आई got in the community, it was like, hey, these were the Americans, like how would I even speak to them? Okay, then something had happened, like I went ahead, फिर मुझ पे एक प्रेशर आया कि like you need to host the event, like क्या करना पड़ेगा। Then I started with the hosting of the event around, मेरा फर्स्ट इवेंट was on Power BI। तो यहाँ पे एक एस्पेक्ट मिला कि मैंने पावर बीआई सीख लिया, वी गॉट द रिसोर्सेज अवेलेबल थे, मैंने सीख लिया, तो ऑब्वियसली इट बिकेम अ पार्ट, लाइक मैं फ्री हैंड नहीं हूँ और मुझे टेक्सटाइल आता है, नॉट टोटली अप टू द मार्क कि एक मुझे जॉब मिल जाए, बट हाँ इंटरमीडिएट कि मैं किसी को ये बताऊँ कि मुझे पता है, मैं एम नॉट नल। आई स्टार्टेड विद द इवेंट वेयर माय जस्ट कॉलेज कलीग्स, आई वाज इन डिप्लोमा कॉलेज, मेरे कॉलेज कलीग्स 15 पीपल वर कनेक्टेड। And I started with the program, I started with the event when I was only the host and the speaker. I was not known in the community. मेरा पहला event back in 2021, मुझे ही सब कुछ करना है। And I started with the event like, hi, I'm Tauqeer, and the journey started until Great. I'm here. And then I'll be adding some more examples here. I got into the GitHub education team, not that they're a GitHub campus expert. मैं काफी बार रिजेक्ट हुआ, but most of them know me कि like who Tauqeer is. तो उससे मुझे काफी हेल्प मिली, चीजें लर्न करी। They are those people who are top to the notch from the brain. I got into the hack club, उसके लोगों से मिला मैं। MLH, जब पेपला, Fabulous, बहुत अच्छे हैं वो लोग। Try to iterate कि how frank they are और कैसे वो अपना टाइम निकाल के अपना काम कर रहे हैं। तो एक सेल्फ अर्निंग, प्रोफेशनलिज्म, कम्युनिटी एंड टेक सारे एक साथ ऑन अ सिंगल हैंड चल रहे हैं। Great. So yeah, like communities do help। बहुत किसी का ये माइंडसेट भी होता है ना कि जैसे एक कोई चाहता है कि
let's join a community and let's start refining ourselves on something. बट ना ऐसा काफी बारी होता है कि आसपास के लोग बोल देते हैं उन्हें कि it will be a time waste, don't join the community. It happens. I'll tell you. November 2022. I was just in MLSA, and that's it. I was just doing up the my chef जो मैं करता था, and I got a chance to be a public relation head of my team at Tezos. Tezos, Yummy Hamzat. I opened up club. ठीक है. Or I leveraged it so hard that I got an offer from Tezos India कि like, hey, whatever you're doing, can you please hold up the events for our Tezos India? आप on board हो जाओ. So वहाँ से I got the job opportunity. I traveled a lot through them, throughout the India, right? Great. Okay. कम्युनिटी से ही मुझे यहाँ फायदा मिला एंड कम्युनिटी से मुझे उधर ही फायदा मिला. तो लाइक इससे ना ठीक है. So overall community do help. It's not like it's not help. If you have the mindset, it do help. It's not like कि सिर्फ तुम it might trigger, but कि तुम मत ज्वाइन किए हो and you're just a dummy to those कि like सिर्फ तुम एक पोस्टर या फिर कुछ बना के दे रहे हो, तुम्हारा सिर्फ इतना ही काम है. So I'm so sorry, you are just being used. It could be a red thing in this podcast, but this is true. I've been a community lead in the MLSA region, India region, and I've seen कि भाई तुम इतना मत करो. If you are up to this thing, तुम स्टेज पर आओ. You can take my stage. I'm free to get it. अच्छे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम कुछ सीखो. जब घर वापस जाओ तो एटलीस्ट यू कुड हैव सेड है कि हे आई हैव लर्न दिस थिंग और मैं ओपन अप हुआ आज. Okay. So, like Tauqeer, what skills should student develop if they want to enter developer relations, or या फिर they want to have a community focused roles? Communication, first of all. Great communication skills. Secondly, obviously for developer relations, obviously you have the tech stack to understand the code base and the knowledge of the tech. उससे बिना तो आप क्या कर रहे हो. अगर ये चीज हटा दो, यू आर टोटली अ कम्युनिटी मैनेजर जो इंगेज कर रहा है. कम्युनिटी मैनेजर इज गेट बीइंग अ पार्ट ऑफ अ डेवलपर रिलेशन. इफ यू आर टोटली कम्युनिटी मैनेजर, दैट्स वेल ओके. तुम्हें इतना टेक नहीं समझना, आई मस्ट से. बट देयर आर पीपल हु सेज कि बहुत टेक समझना भी कम्युनिटी मैनेजमेंट इट्स ओके. सबके अब तक जॉब रोल्स हैं, नो डिनाई. बट डेवलपर रिलेशंस इट्स I must say that it's a code plus community. You are bridging to the user of that code base. Considering the fact that, let us suppose I was in Tezos and there were users directly on the Reddit and all who are using the Tezos code base. Tezos का code base use करना है, right? Yeah. Who they will be connected to? Obviously to us. वो मुझसे आएंगे, मेरे head के पास जाएंगे. So from Tezos, code developer of Tezos to the end user who are using Tezos, तो उसके बीच में मैं बैठा हूँ, who are like complying. Hey, this is the thing, we are getting a feedback. And to those people, hey, this is how you have to do. This is the use case. You have to understand. So obviously, मुझे दोनों का perspective समझना है, तो obviously you should be having a knowledge of technology. Yeah. So yeah, एक तो communication skill is very important in any field. It's very important. अब जब तक Any field, I must say. in any field is very important. जब तक आप communicate अपना बात ही अच्छे से नहीं रख पाओगे, सामने वाला समझेगा ही नहीं, तो it would be, आपके पास कितना भी अच्छा knowledge क्यों ना हो, कितना भी अच्छा क्वेश्चन, it would be a waste. Because even if we see in hackathons also, ये काफी बारी होता है कि overall ये बहुत अच्छा होता, sorry, okay, so overall hackathons में भी ये काफी बारी होता है ना कि प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा होता है, बट एट द एंड उनका पिचिंग या कम्युनिकेट वो नहीं कर पाते अपना प्रोजेक्ट आइडिया, एंड ओवरऑल फिर वो बेकार हो जाता है. तो यू लाइक it happened back in Tezos only. When I was obviously we had to some projects. मुझे project चाहिए in hackathon. There were people from different regions. They had a good project. Like ठीक है, मैंने भी अपने टाइम में इतना नहीं सोचा, तुमने सोच लिया, वेरी गुड. और यार they were not able to pitch those things. समझा नहीं पा रहे मुझे अभी, लाइक कि यार ऐसे तो नहीं होगा. एंड ऑन बट वे से आई वुड गेट देम मार्क्ड. मैं उनको मार्क क्या करूं. अनफॉर्चुनेटली हटाना पड़ा, मुझे समझ ही नहीं आया प्रोजेक्ट. आई नीड टू गेट टू माय लीड लाइक, हे दिस इज द प्रोजेक्ट, बट
नहीं हुआ आगे। बताइए हुआ एग्जैक्टली। एंड सेकेंडली काफी बार ये होता है ना कि पिचिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है बट उनका प्रोजेक्ट या फिर नॉट जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्ट, कोई भी फील्ड पे टेक स्टैक, यू हैव टू नो द टेक्नोलॉजी, यू हैव टू नो द टेक स्टैक if you are a developer relations or in any developing kind of thing. हम्म। Great. So, like, so what's make a developer community? Like, it's what does it make a truly strong community or a truly strong developer community? And साथ ही साथ बस strong के साथ it should be sustainable too. So, what does truly make a community, a developer community, strong as well as sustainable? That's a brilliant question, actually. My very elder, my very seniors in the community used to say, to get it sustained or to make it up to the mark, Hmm. people should communicate. They should communicate. I have seen like people or the members of the community just doing up the stuff and the local community, I'm saying, Yeah. doing up the stuff and doing nothing. वो कुछ नहीं कर रहे हैं, like या तो कुछ नहीं कर रहे हैं या कुछ करा भी तो like they wanna share. मुझे उनको शेयर नहीं करना, उनको मतलब हाउ आर यू इवन कनेक्टिंग विद देम यार? तुम कम्युनिटी में हो, अगर तुम फायदा उठाना चाहते हो लोगों का अक्रॉस द वर्ल्ड, Hmm. वैसे तुम्हें टेक्स्ट तो करना होगा, बात तो करनी होगी। इवन दो वी आर इन दिस कॉल, आप मुझे आप जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ, Yeah. कम्युनिकेशन तो चाहिए। हाँ. सेकेंडली सस्टेनेबल, इट्स नॉट ओनली कि तुमने एक बार कोई चीज की है, बार लाइक ट्राई टू इटरेट दोज थिंग्स, मेक इट अ हैबिट और व्हाट यू विल से, मेक इट प्रोग्रामेबल और उसको एक लेवरेज करके ऊपर लेके जाओ, एक्सपोनेंशियल वे में ऊपर लेके जाओ। Hmm. आप ब्लॉग्स लिखते हो, वीडियो ब्लॉग्स बनाते हो, उसका एक लेवरेज, एक साइज बढ़ाओ, उसका लेवल ड्यूटी बढ़ाओ। Hmm. Why not to post it on LinkedIn or Twitter? Even though, let us suppose I do will make a video on GitHub Copilot, I see a lot of stuff. I do mark the people directly from the GitHub जो connected है, to let them know like, hey, there is a Tauqeer, there's a person who is building this thing, जो बना रहा है, अच्छा कर रहा है, you can check this out. If they get a chance, obviously my video can be published or my video can be used at somewhere. Yeah. Why not? Why to leave a moment? कोई moment छोड़ना ही क्यों? Full of opportunities are there. Use it. Yeah. Like, it's more like if you have missed an opportunity, there's more opportunity, you can go there because there are many more opportunities and काफी बार ये होता है कि we don't, हम लोग एक ही चीज को लेके बैठ जाते हैं कि ये नहीं हुआ तो let's just skip this, skip that. Yes, correct. It had happened to me like for the GitHub campus, but I have been rejected for 5 times. इंडिया में सबसे ज्यादा रिजेक्ट होने वाला मैं ही था। एंड एंड जब मैं लास्ट टाइम रिजेक्ट हुआ, जब द प्रोग्राम मैनेजर Juan Pablo came to India, Delhi only, it was the time of KubeCon. Okay. He messaged me of, hey Tauqeer, are you available for a dinner as well? So apart from the GitHub campus expert, I was just MLA from the region. I also got a chance to have dinner around. So opportunities are there, and he also guided me like, hey, do you still want to be campus? But I can make you aware that, like, no, I'm not that Tauqeer Ahmad now होता हूँ कि वो अपने जो टाइम लगा पाए. He has moved on and he looking for up and forward things. उसके पास अब और चीजें हैं जो करना चाहेगा, तो priorities move on and there's nothing like कि तुमने एक बार छोड़ दिया नहीं होगा, by rejection तो है. I have seen people rejected from MLH 3 times and और उसके बाद वो बहुत अच्छा कर गए. Right? Yeah, like it's nice ना कि कोई भी रिजेक्शन तब तक ही वो रिजेक्शन है जब तक आप उसको ऐसे फेलियर लेके बैठ ही गए हो, बट लेकिन आप अगर उससे अपना लर्निंग फीडबैक निकाल के फिर अप्लाइंग दैट थिंग, इट्स नो मोर अ फेल, इट्स नो मोर अ रिजेक्शन, यू कैन हैव अ बेटर पोजीशन in future, who knows. Correct. Why not? Use it. In fact, the program manager of GitHub Education जो small impact पे थे, अश्विन भैया, मैं उनको अश्विन भैया बुलाता हूँ, बहुत बड़े में से, वो खुद एक दो बार प्रोग्राम से रिजेक्ट हुए थे और वो प्रोग्राम मैनेजर बन गए डायरेक्ट. See, it's like, तो रिजेक्शन कहाँ लेके जाता है, you know. yeah. In So, fact, for me in Tezos India, I was also not selected for the lead. I was just peer lead to under आता था, तो मैं खुद प्रोग्राम मैनेजर बन गया उसके बाद. see, हाँ, ये मुझे अभी अच्छा नहीं याद आया.
इट्स लाइक वही मैंने बोला ना कि रिजेक्शन तभी तक रिजेक्शन है जब तक आप उसको ऐसे लेके बैठ ही गए हो कि और हाँ, जैसा कुछ पॉइंट रिजेक्शन तब तक रिजेक्शन है, उसको जो दिल पे लेके बैठे हो हाँ। रिजेक्शन है, उसका कुछ तो कुछ एंड रिजल्ट बना लो यार, मजा आएगा। फिर जैसे वो एंड रिजल्ट बन जैसे आपका वो एंड रिजल्ट बना ना, यू आर द मैनेजर, फिर यू कैन से इट समवन someday. Okay. So, sir, like, what is your personal framework for learning हाँ, new tools efficiently? Like, a student or someone जो वो framework को जो आपका personal framework है आप share करना चाहो कि what are your personal framework जिसमें आप नए tools को efficiently learn करते हो, so that it can help students who are watching this उनको भी वो चीज realistically learn करने पर apply करने में help हो पाए. I'll tell you for the framework, I'm not understood, but मेरा फेवरेट फ्रेमवर्क जो मुझे अवेलेबल सामने से मिला है वो नेक्स्ट.js है, बट या इट्स नॉट बिकम्स अ टूल बिकॉज वो टूल नहीं रहता। आई एम इनटू द डेवऑप्स गाय, सो मैं कैसे उसको याद करता हूँ या समझता हूँ। आई फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंटेशन, उसके बिना तो जिंदगी नहीं चलेगी। समटाइम डॉक्यूमेंटेशन आर वेरी हार्ड, व्हाट यू कैन डू टुडे वी हैव द एआई, गिटहब कोपायलट हैज द फीचर ऑफ कॉन्टेक्स्ट सेटिंग। जो डॉक्स हैं उसको सेट कर दो गिटहब कोपायलट में, और वो सारा इटरेशन करके सर्च कर देगा वेब से, और वो पूरा समझ लेगा आपके लैंग्वेज में, उसे जो पूछो करेगा, उसे जो बनवाओ वो बनाएगा। तो उसे समझो, बनाते जाओ, आगे बढ़ो। आगे बढ़ते जाओ। ग्रेट। सो लाइक आई होप जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं दे कैन आल्सो डू दिस थिंग इन गिटहब कोपायलट, एंड मुझे भी ये बात नहीं पता था, सो आई एम आल्सो टेकिंग नोट्स फ्रॉम दिस। वन ऑफ द फैसिनेटिंग थिंग है ये तो, कॉन्टेक्स्ट सेटिंग। कॉन्टेक्स्ट बता दो ये डॉक्यूमेंटेशन का, अब इससे जो करना है करो, इससे ही बनाना है डॉक्यूमेंटेशन में। So like Sakir, what's your approach? Okay, like you said, it's GitHub Copilot, that thing. If you had now, let's like my last and final question to you, and it's more for the students. If you had to give one piece of advice to students who feel uh, who are in tech and want to grow in tech, what would it be? Oh, that's pretty not a very easy question. बहुत मुश्किल क्वेश्चन है बिकॉज फर्स्ट डिस्क्लेमर फर्स्ट, गाइस, एवरीवन्स लाइफ इज डिफरेंट, सबके पास अपने चैलेंजेस हैं, सो डायरेक्टली डू नॉट टेक द ओपिनियन डायरेक्टली फ्रॉम मी, बट एक आइडिएशन दे सकता हूँ मैं, ध्यान से Yeah, सुनना sure. यार। गेट योरसेल्फ अ फाइट, तुम्हें फाइट करना होगा, तुम्हें बचाने के लिए लिटरली कोई नहीं आएगा। यू कुड जस्ट हैव अ मेंटर, जैसे मैं यहाँ पे मेंटोरिंग कर रहा हूँ, यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद मी ऑन लिंक्डइन, बट इससे ज़्यादा तुम क्या ही कर सकते हो। सो गेट योरसेल्फ अ फाइट, अपने जुगाड़ निकालो, लाइक गेट योरसेल्फ बर्न्ड, असली में जलाना नहीं, अपने कोड को जलाओ, चीज़ें फोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना एक नकली प्रोडक्शन सेटअप रखो, चीज़ें बनाओ, थिंक इट लाइक यू आर इन अ कंपनी और चीज़ें ऐसे ऐसे हो रही हैं, कैस्केड करो, अंडरस्टैंड करो, बेटर योरसेल्फ एट कम्युनिकेशन स्किल्स, गेट इन डेवलपर इवेंट्स, उनसे कनेक्ट करो, अपने कॉन्टैक्ट शेयर करो, उनको थोड़ा चेस करो कि लाइक दिस आर द थिंग्स, एंड दैट्स ऑल, यू गेट इट डन। Okay. So it's more like कि आप जितना दोगे it will reflect out. And one thing I want to add, Yeah. whatever thing you are getting from the community, try to give it back. This is the way I'm also doing it, giving it back. Okay. Yeah, it would be more like after all it just helped you so you can give it back, and it will be a good relation too, good communication and good relation will happen then also. Perfect. That is very great. Great. So thank you so much, Tauqeer, for joining us today. And it was actually a really very nice podcast with you. And overall, it was very great podcast. And again, your knowledge about DevOps, and then how to about community, how can we take advantages from community, how can we learn from resources, and how can we manage everything, and especially your GitHub pilot things. Even that is going to help me now. GitHub Copilot. Yeah. So thank you so much, sir. It was a very nice podcast with you, and I'm sure everyone who is watching this are gonna take some really very good notes from this too.
that is totally awesome. Thank you so much, sir. So, to everyone watching this, this was Hacker TV, powered by ASAC 5.0. If you enjoyed this episode, don't forget to like, share, and subscribe for more mentor insights, tech conversations, and hackathon stories. Until next time, keep learning, keep building, and keep hacking smart. This is your host, Jayati Shri, signing off.